let me call upon stage Nitin Soni. Louder, louder, louder. Come on, louder. दोस्तों, success in any field is 70% psychology and 30% mechanics. किसी भी फील्ड में, in whatever field you choose, success is all about 70% psychology and 30% mechanics. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी क्या डेब्यू? अच्छा, सचिन तेंदुलकर ने मारी थी? अच्छा, धोनी ने मारी थी? But all of these three individuals are legends. In spite of the fact that they did not score century on debut. Even if you are not able to score century on debut, you can still become a legend if you take few things right. Understand this. Why do you want to become what you want to become? Why do you want to get that success? Why do you want to get that degree? Why do you want to become a rank holder? Why do you want it? Answer your why. They are compromising on their potential. You have amazing potential in you. Why do you want to restrict it? You're not supposed to restrict your potential. Warren Buffett has 97 different streams of income. 97. And the day I realized, the day I noticed it, I said, 97? What the hell? What is the difference? The difference is in their psychology. That's where the entire difference lies. That's the main thing. You need to understand your psychology, your mindset. Ushme kya chal raha hai? That's what you need to focus. Excellent. And I knew I would be the top scorer in the institute. And that's exactly what I did. Each and every paper that I gave, when I came back home, I said, I'm ready for the next one. And I did that. Ready for the next one. Did that. Then I waited for my results. And on the results day, what did happen? I failed. What is it that I can do now? At the best I can study. At the best I can put in the hard work. At the best I can do whatever is possible for me to do. What else can I do? He actually looked at the big portrait of Mount Everest and he said, Mount Everest, I know you are failing me. But the more and more you fail me, the more and more I'm getting determined that one day I'm going to stand on top of you. Do you know why, Sir Edmund Hillary said? He said, do you know why? Because you, even as Mount Everest, cannot grow any further. But I, as a human being, will keep growing. That's my message to you. Keep growing. No matter what Mount Everest you want to climb in your life, you can. If you have the right mindset and if you do not let your failures enter your mind, God, because it's your responsibility, friends. It's your responsibility. Nobody else is going to work hard for you. Nobody else is going to bring your dream in a silver plate and say, hey, here is your dream, enjoy. No, that's never going to happen. You will have to work hard. You will have to put in the hard work. You will have to burn the midnight oil. You will have to make your dream come true. The responsibility is yours. I cannot do your push-ups for you, can I? Can I? Of course not. You will have to do your push-ups. What do? You notice that you are not the only one who is watching that dream. You are not the only one having that dream inside you. When there are 1,000 other mothers who are having the same dream for their sons, what do you do to make the dream of your mother come true? You outwork your competition. You outwork your competition. You get up early. You work harder. You stay longer. You do whatever it takes. You got to overwork. You got to outwork. You got to outsmart everybody else. Because if you don't do it, someone else is going to do it. If you don't do it, someone else is going to do it. If you are not getting up early, someone else is getting up early. And he is going to grab your position. He's going to grab your position. Understand this. You got to outwork your competition. If it means doing anything that you have not done till date, you should be interested in doing it. Learning techniques, learning facts, programming your subconscious, whatever it may be. Be ready to outwork your competition. My intensity multiplied. My hunger multiplied. My seriousness multiplied. I prepared like hell. I was actually doing things that nobody around me was doing. I was studying for 12 hours a day and I said, no matter what happens on the results day, I'm going to give my best shot in this again. I studied like anything. And I did all those test papers, working studies over and over and over again. I revised over and over and over again. And I gave my exams to the best of my ability. And all the results on the screen said, pass. Unless and until you answer your whys, you will not be able to remain motivated. You need motivation? Answer your whys. Answer your whys. Why do you want to do what you want to do? Is it because of your father? You want to make your father's dream come true?
Is it because of your mother? Your mother is looking a dream for you and you want to make her dream come true? Is it because of your siblings, your brother, your sister, your other family members? Or is it probably because yourself? You say, I want to become rich because I want to prove to the world that I am a rich person and I'm not a poor person. You got to answer your whys. Why do you want to become what you want to become? Answer your whys. Because this is exactly where motivation lies. What are you waiting for? Whatever it takes. Even if it takes for you to learn something, learn it. If it takes for you to work hard, work hard. If it takes for you to get up early in the morning, get up early in the morning. If it takes for you to work in day in and day out, do it. He was a world heavyweight champion in boxing, Mike Tyson. डरते थे लोग उसके नाम से. और Mike Tyson won 37 fights back to back. अपनी लाइफ की पहली फाइट से लेकर 37 फाइट्स तक माइक टाइसन हर एक फाइट जीतता गया. एक भी फाइट वो नहीं हारा. और पीपल यूज्ड टू स्वेट बाय हिज नेम. डरते थे लोग उसके नाम से. 37 फाइट लगातार जीतना इज नो गेम. एंड ही वाज द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन. 37 फाइट लगातार जीतने के बाद जो 38वीं फाइट उसकी थी वो थी अगेंस्ट जेम्स बस्टिन डगलस. और ये जेम्स बस्टिन डगलस कौन था? कुछ भी नहीं. अ नॉर्मल बॉक्सर, वेरी नॉर्मल बॉक्सर. कभी भी अपने लाइफ के अंदर हेवीवेट चैंपियन नहीं बना. कभी भी उसने कोई बहुत बड़ी चैंपियनशिप नहीं जीती. वेरी नॉर्मल बॉक्सर. 38th मैच माइक टाइसन का अगेंस्ट जेम्स बस्टिन डगलस. It was a one-sided match. They said Mike Tyson is going to win anyways. सारा मीडिया हैरान, सारी दुनिया हैरान. Mike Tyson lost the match. 38th fight, Mike Tyson lost it. How come? ये कैसे हो सकता है? सारा का सारा मीडिया पागलों की तरह जेम्स बस्टिन डगलस के पीछे. बस्टिन डगलस, ये तुमने किया कैसे? How did you just won against Mike Tyson? Impossible. How could you do the impossible? ये किया कैसे तुमने? He said, before this match, my mother declared to the world that her son is going to beat Mike Tyson. She declared it to the world, to the relatives, to the friends, everybody, and she was extremely happy. और जेम्स बस्टिन डगलस ने कहा, माँ क्या कर रहे हो? Why are you doing that? I'm not too sure. She said, you are not sure. I am sure because I believe in my son. My son is going to beat the hell out of Mike Tyson, and my son is going to win. He said, it was my mother's dream that I beat Mike Tyson. It was my mother's dream that I become the world champion. It was my mother's dream that I become a true champion in my life by beating Mike Tyson. And not just Mike Tyson, whoever it may be. And my mother died 2 weeks before this match. He said, my mother died 2 weeks before this match. And I wanted to make her dream come true. He said, I wanted to make her dream come true. Mike Tyson के अलावा अगर वहां पर 100 Mike Tyson भी होते, उसके बावजूद मैं ये मैच जीतता. Because it was my mother's dream and I wanted to fulfill my mother's dream. ये सोचता है कि मैं स्पेशल नहीं हूं. अगर यहाँ एक भी सोचता है कि मैं वर्दी नहीं हूं, मेरी रिक्वेस्ट है उससे कि आज की शाम अपने पेरेंट्स के साथ बिता लेना. आज की शाम तन्हाई में अपने पेरेंट्स के साथ बिता लेना और आपकी माँ, आपके पिताजी आपको बताएंगे कि आप कितने स्पेशल हो. There is nobody in the entire world who has a fingerprint like you. Luck, नसीब. कई मैं से देखता हूं जो अपने नसीब को पकड़ के बैठते हैं, जो ये कहते हैं कि it's only and only because of my luck. If I'm failing, it's only because of my luck. नसीब की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता. मगर दो तरह के लोग हैं, बिलीव करते हैं नसीब, कुछ बिलीव नहीं करते नसीब के ऊपर. आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी नसीब की वजह से ही सब कुछ होता है, अगर आपके लक की वजह से ही सब कुछ ये हो रहा है, तो मेहनत क्यों कर रहे हो? मेहनत करने की क्या जरूरत है? और अगर नसीब में नहीं लिखा तो मेहनत करके क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? नसीब को लेकर के मत बैठो. जब आप अपने नसीब को देख करके कहते हो कि भाई कभी ना कभी तो चमकेगा, आपका नसीब आपको देख करके कहता है कभी तो समझेगा. आप नहीं समझते. You command respect, power, recognition, social status, everything. It has amazing power. I'm the king of the jungle now. If you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be easy. Alrighty, there you go, friends. Good evening and welcome to day 18 of the Superpower Success Summit. This is Nitin Soni and I welcome you all.
और आप सभी को जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये त्योहार, ये फेस्टिवल, एक बार आप सबको आज के दिन की बधाई देना चाहता हूं। और आई एम श्योर आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जहां भी हैं, जो भी है, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आई एम श्योर आप सब इसे सेलिब्रेट कर रहे होंगे इन वन वे और अनदर। और आज it's a special day in the summit as well, because we have a very special guest. We have a very special guest today who will be speaking on a very important topic. Very, very important topic. दोस्तों, आज on this day 18 of the Superpower Success Summit, we're going to talk about your posture. We're going to talk about the way you sit. We're going to talk about the way you stand. We're going to talk about the way you work. आज की तारीख, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक, आप सब ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब ये वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया हम सबका, अचानक से सभी वर स्टेइंग इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस, लॉकडाउन कंप्लीटली, एंड दे वर वर्किंग। तो और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम चलता ही आ रहा है। अभी भी आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, ऑल्दो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हैव ओपनड अप, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम। अब ऐसे केसेस में, इसके अलावा भी, when in fact उसके when people are working from home and stuff, the way they sit, the way they work, the way they are spending their time on their systems, their laptops, it is having an impact on their health and a very deep effect. और आज के इस सेशन में हमें डिस्कशन करनी है इसी चीज की। आज जब स्मार्टफोन हमारी लाइफ का इतना इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि स्मार्टफोन के बिना we cannot imagine our life. It can be like, let me ask you, can you imagine your life without smartphone? I'm sure the answer is no. You cannot even imagine. और ऐसे केसेस में when you cannot imagine your life without a smartphone, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि सुबह, the moment you get up in the morning, the first thing that you see is your smartphone. The last thing that you check when you end your day is your smartphone. चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, खाना नहीं खाता जब तक उसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं हो, और बड़े से बड़ा आदमी खुश नहीं है अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं हो। यस और नो? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप क्या करते हैं। अगर 10वीं मंजिल से आपके ग्राउंड फ्लोर तक लिफ्ट पहुंच रही है, सो द मोमेंट यू सी इट्स गोना टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, यू टेक द स्मार्टफोन आउट इन योर हैंड एंड यू चेक इट। सोशल मीडिया भरा पड़ा है नोटिफिकेशन से, अपडेट से। आप चाहकर भी सारी अपडेट्स पर अपडेट नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद we spend a lot of time on our smartphone. Type in agree in the chat box if this makes sense to you. Type in agree. और ये जो गैजेट्स हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं, स्मार्टफोन बन गया है, लैपटॉप बन गया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट, एक विजिबल नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सर्वाइकल कॉमन होती जा रही है, नेक पेन, बैक पेन नॉर्मल होते जा रहे हैं, है कि नहीं? नेक पेन, बैक पेन नॉर्मल होते जा रहे हैं। और इन केसेस में जब आप इन सब चीजों से सफर करते हैं तो हमें लगता है कि हेल्थ प्रॉब्लम मेरी हेल्थ के साथ है, प्रॉब्लम मेरे साथ है, मेडिसिन लेता हूं, मेडिकेशन करता हूं। हो सकता है कि इसका कोई आंसर हो सकता है इसका कोई समाधान हो सकता है आप कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हो जिनसे आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके और एक हेल्दी प्रोफेशनल बन सके। बस यही है आज का सेशन। That's what we want to do and that's what we want to achieve in this session. दोस्तों, आज मैं जिस स्पेशल गेस्ट से आपको मिलाने जा रहा हूं, he is an ergonomics specialist. एर्गोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट हैं और अभी उन्हीं से समझेंगे कि एर्गोनॉमिक्स है क्या। A lot of people may not even be aware what ergonomics is. This man is the #1 best-selling author of the book Ergonomics for Corporates. Yeah, I'm talking about none other than the one and only Dr. Dipankar. Let me have Dr. Dipankar on screen. Dr. Dipankar, good evening. Namaskar, Dr. Saab. Good evening. Good evening. Thank you so much for the invite and lovely introduction. Thank you. Thank you very much, Dr. Saab. Happy Janmashtami. बहुत-बहुत मुबारक हो आपको जन्माष्टमी. I'm so glad to see you on screen here. How are you doing, Dr. Saab? All good, all good. All good. Let me tell all of you, very humble, down to earth man, but a very knowledgeable and expert in his domain.
दोस्तों मेरी भी जब कुछ समस्याएं आई, चाहे बैक पेन, चाहे कुछ नेक पेन, ऐसा कुछ, तो मैंने इन्हीं की सलाह ली. न सिर्फ मैंने बल्कि मेरी वाइफ को जब कोई प्रॉब्लम एक बार हुआ, then we had this awesome opportunity when he was around us, we were together doing something, तो उन्होंने भी उनको सजेशन दिया और उन्हें फायदा हुआ. तो एक ऐसे ही दमदार शख्सियत से आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं. डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये ergonomics किसे कहते हैं? lot of times when a lot of people are not aware, they ask me ergonomics किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? So ergonomics basically, if we कोई economics से ही कुछ मिलता जुलता है? No, it's totally different, but definitely it's very, very important. I mean, equally important than economics. So ergonomics, if we divide ergonomics into two parts, ergon मतलब work, economics is the laws of work. जी. You can also call it as rules of work. अगर हिंदी में बताऊं तो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करने का सही तरीका विदाउट हर्टिंग योर बॉडी, राइट? या आपका हाउ यू टेक केयर ऑफ योर प्रोडक्ट, हाउ यू, बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स ergonomically डिजाइंड होते हैं, बट हाउ वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज ergonomically साउंड, राइट? और फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन ergonomically डिजाइन है, स्क्रू ड्राइवर है ergonomically डिजाइंड है, लेकिन आपने उसको प्रॉपर्ली अगर पकड़ा नहीं तो यू माइट हर्ट योरसेल्फ, ठीक है? I see. So one is product designing में ergonomics plays a vital role in the sense, let's say आपका जब ergonomics आप अगर एरोप्लेन डिजाइन होता है या मे बी कार डिजाइन होती है, उनके चेयर्स डिजाइन होती है, so it plays a vital role in designing part. And when it comes to यूजर, जब ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब कॉमन बनते हैं, जो कॉमन पीपल यूज दीज प्रोडक्ट्स, तो यू हैव टू यूज वेरी इफेक्टिवली सो दैट उनको प्रॉब्लम्स ना आए, उनका जो जितनी भी उनको जो एक्सेसिबिलिटी है, जो उनका यूजर इंटरफेस है, या उनको कोई तकलीफ ना आए उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए. सो दैट इज ऑल अबाउट ergonomics. This is what all ergonomics says, friends. I'm sure you are getting an idea and getting deeper understanding of the subject. This is going to be an interesting session. डॉक्टर साहब ये बताइए, डेस्क योगा ये थोड़ा सा यूनिक है. मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि when we say desk yoga, that's the name that we have given to the session today. Yeah. Desk yoga. What is that supposed to be? So desk yoga, desk मतलब people are working on the desk. I mean, before pandemic also, right now also, right? But पहले offices में काम करते थे, but now they are working on in their working, I mean, work from home पे या sofa पे, bed पे and all that. And yoga means what you can do at your desk, what all you can do at your desk to relieve these aches and pains. So that is where this desk yoga come into picture. So आप कौन सी योगा आसनास कर सकते हो? सिंपल, नॉट प्रॉपर योगा आसनास, बट सिंपल स्ट्रेचेस, सिंपल एक्सरसाइजेस ऑन योर चेयर्स विदाउट. काफी लोग बोलते हैं कि हमें पास टाइम नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे पास इतना पेंडिंग वर्क है, डेडलाइन है. अगर कोई, इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल लाइक सीए, सो उनकी फाइलिंग होती है, सो उनके डेडलाइंस होते हैं, इतने लास्ट की डेट्स हैं, सो दे हैव टू बी इन द सिस्टम, पूरा टाइम बैठे रहना. So what they can do to improve this, चेयर पे बैठे रहना है कि एटलीस्ट इतना तो कर लो, अपनी बॉडी को थोड़ा तो हिला लो. So that's how this yoga is very, very popular these days. I am sure. Doctors, I mean, I want to say this to all of you, everybody who's attending this session right now, and the people who will be watching the session later on. दोस्तों, important नहीं, बहुत important है. आज का सेशन आपकी डायरेक्ट हेल्थ से जुड़ा है. आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी लेवल पर नेक पेन या बैक पेन से परेशान होंगे. कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के पोस्चर में प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी आपकी योर एंटायर हेल्थ. तो आज के सेशन को ध्यान से सुनिएगा. फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. आई टेक दोस क्वेश्चंस लेटर ऑन, बट अटेंड, टेक नोट्स, अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ. या and your productivity is directly related to your health. So Dr. Saab, all ears to you. I take the back seat now and I hand over the stage to you. Over to you, Dr. Saab. Thank you. Yeah. So once again, happy Janmashtami to everyone. So today's the topic is desk yoga.
so which I have already covered कि उसमें क्या है. So first we'll discuss about the desk yoga. So what is the importance, why we should understand desk yoga. So desk yoga में आप क्या क्या benefits हो सकते हैं. So since after COVID, I mean before, ऐसा नहीं है बैक पेन नेक पेन अभी हुआ है. So बैक पेन नेक पेन लोगों को पहले भी होता था, और IT प्रोफेशनल्स, दोज हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स, और जो जिनका स्मार्टफोन पे ज्यादा काम है, जिनका सिटिंग और मे बी स्टैंडिंग का ज्यादा काम है, उनको भी प्रॉब्लम्स होती थी. बट ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है व्हेन दिस आफ्टर पैंडेमिक, बिकॉज हमारा घर पे बैठ के काम करना, हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी सिटिंग का एक जगह का पोस्चर, वो और ज्यादा कम हो गया. पहले तो चलो ऑफिस में आप घूम लेते थे, थोड़ा सा प्रिंटर के पास चले गए, थोड़ा सा वॉक कर लिया, बीच में ब्रेक ले लिया. बट नाउ इन ड्यूरिंग दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है. आप एक रूम से रूम कितने दूर जा सकते हो. सो दैट्स हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. और ऐसा नहीं एक एज ग्रुप में, सब एज ग्रुप में हो गया, बच्चों को भी. बिकॉज if I talk about my OPDs also, 40% more is like after COVID, 40% are my kids OPD, right? And people are parents are more concerned about their kids health, कि उनका forward head posture हो गया, neck pain होना start हो गया है, उनको उनका बहुत lazy हो गया है, उनका जो spine में deformities होना start हो गया है, so back pain start हो गया है, right? Flat foot हो गया, so बहुत सारी changes आना start हो गया. So that's how this is very very important. And if I talk about different professionals, जैसे for example CA, dentist, lawyers, architects, so they sometimes they retire early because of their aches and pains, because they also, dentist को भी बहुत ज़्यादा देर बैठ के काम करना होता है, right? Doing some procedures, I mean patient after patient. और if I talk about CA, उनका भी बहुत देर काम करना होता है, especially during these deadlines. Architects से बहुत ज़्यादा, lawyers का भी बहुत sitting है, so they retire prematurely because of this aches and pains. So अगर if they understand this better कि कैसे उसको simple तरीके से simple exercises से, simple posture correction से अगर आप उसको ठीक कर सकते हो, तो you can easily enjoy your life, also easily enjoy your job, and you don't have to live with the pain, and you don't have to retire early, right? So this is very very important. You don't have to go to any physio if you understand desk yoga, right? आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी physician के पास जाने की जरूरत नहीं है for the painkillers and muscle relaxants, because if you understand this fully, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, right? Then other benefit would be you will be feel more confident if your posture is right, if you don't have neck pain, shoulder pain, back pain, so you will feel more confident. आपका productivity बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका efficiency बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. जो आप काम 1 घंटे में करते थे, अब वो आप probably you can do it in 15 minutes or 20 minutes, right? So this is how you can improve your lifestyle, ठीक है? So this is very very important, because आजकल ये जो स्मार्टफोन कल्चर आ गया है, टेक डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं, so we have to be very very careful in how we are using these gadgets, because these gadgets are main culprits of having these problems. Okay, so now let me tell you, so what are the problems which people are facing nowadays. So one is neck pain. Neck pain होता है जिसको like यहाँ पे पेन होना. So neck pain start कैसे होता है? So there are only sometimes people feel कि यहाँ पे tenderness हो गया, tension हो गया यहाँ पे, ठीक है? So यहाँ पे जब तक आप दबाओगे नहीं, आपको tension feel नहीं होगा, right? People come when जब ज़्यादा उनका हाथ से बात चली जाती है, जैसे for example उनको headache हो गया, या उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आना स्टार्ट हो गया, या मे बी उनको हाथों में पेन आना, numbness आना स्टार्ट हो गया है, right? और या उनकी जैसे सुबह उठते हैं तो उनको नेक घूम ही नहीं रही है, ऐसी बिल्कुल टर्न ऐसे हो जाती है, या किसी के बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया बिकॉज ऑफ स्लीपिंग पोस्चर. सो डिफरेंट एरियाज में, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ नेक पेन. सो फॉरवर्ड हेड पोस्चर ऐसा होता है, आप अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल ऐसे है तो फॉरवर्ड हेड में ऐसे हो जाएगा. सो आपका ये वाला ईयर हैज टू बी अबव योर शोल्डर्स, बट अब ऐसे चला गया है बिकॉज ऑफ दिस
center of gravity comes forward and these muscles have to work very, very hard. So now, so that's how this you will feel some eyeball mein pain hona, headache, ears mein pain hona, and then tension headache. So these are the symptoms which most of the people face due to this this forward head postures. Okay. So next comes as the shoulders. ठीक है. So shoulders का भी problem तभी होता है जब हम कोई भी काम कर रहे हैं बहुत देर तक. फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई टॉक अबाउट हाउसवाइफ इज कोई भी घर पे कोई किचन पे काम कर रहे हैं तो उनका हैंड की पोजीशन ऐसी होती है, कुछ भी बना रहे हैं जैसे गाजर का हलवा बना रहे हैं, राइट. सो काफी देर उसको घुमाना होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पेन होगा शोल्डर्स में. सो मैं इसके सारे रेमेडीज में बताऊंगा क्या क्या है, एंड आई टॉक अबाउट अदर दिस थिंग एक्सरसाइजेस भी हम रियल टाइम एक्सरसाइज करेंगे लास्ट में, एंड देन आई विल टेक योर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. सो ऐसे सिमिलरली, सो अगर नेक पेन से बचना है, ठीक है, सो आपको मैं एक सिंगल फंडामेंटल एंड सिंपल रूल बता रहा हूँ. सो नेक को बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट रखो, जितना आपका हेड स्ट्रेट रहेगा उतना बेटर है. इन सिंक विद योर हैंड की पोजीशंस. फॉर एग्जांपल ऐसे, सो दिस हैंड हैज टू बी, आपका नेक स्ट्रेट है, आपका हैंड इज 90 डिग्रीज लाइक दिस. ओके, अगर आपके दोनों सिंक हैं सो देन यू आर एट द सेफ जोन. अगर इन दोनों में कुछ भी चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका हेड स्ट्रेट है एंड हैंड्स आर नॉट रेस्टेड, फॉर एग्जांपल किस सिचुएशन में होता है, जब हम लाई डाउन करते हैं सोने से पहले, हम लेटे हुए हैं, हमारा नेक इज रेस्टेड एंड हैंड्स आर ऑन द फोन लाइक दिस, स्क्रॉलिंग एंड टेक्सटिंग एंड डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग सोने से पहले, वो जो नहीं करना चाहिए. सो उसकी वजह से आपको शोल्डर्स और नेक पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज नेक तो रेस्टेड है बट हाथ ऊपर चला गया, राइट, हाथ यहाँ से. सो वही मैं बता रहा हूँ. सो नेक और हैंड हैज टू बी क्लोजर टू योर बॉडी, दोनों साथ साथ होने चाहिए. और सिमिलर डिफरेंट सिनेरियो, आपका स्मार्टफोन जब यूज करते हो तो स्मार्टफोन आपका इफ यू आर सिटिंग एंड यू आर टेक्सटिंग, राइट, समथिंग लाइक दिस ऐसे. सो हमारा हाथ रेस्टेड है क्लोजर टू द बॉडी एंड नेक इज नॉट रेस्टेड, नेक bend है. So this will also cause the problem. Let me tell you, you need to understand first this. अगर आपको ये समझ आ गया तो you can find out कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो. Because people understand, some of my patients understand very very late कि हम ये कर रहे हैं शायद इसकी वजह से हो सकता है. So when I ask them deeply कि इस वजह से तो नहीं है, आप ये तो नहीं करते हो, then they हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ, right? So for example, one of the patients was having a habit of using the smartphone sideways while sleeping sideways. ऐसे sideways हो रहे हैं. They are thinking कि हम सही postures पे, हमारा neck भी rested है और hand भी rested है. ऐसे sideways हो रहे हो, phone यहाँ पे, and then you are, तो इसमें क्या, ये वाला हाथ नीचे है तो this is rested, this hand is above because of you have to scroll and change. अब right hand will be अंडर ट्रबल. सो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, नेक में प्रॉब्लम, ट्रेपीजियस में पेन, टेंशन, हेडेक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, राइट. सो बेसिक फंडा ये है बैक नेक पेन का, ठीक है. सो आपको इसको यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू थिंक, बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्चर्स. कुछ भी आप काम कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो या फोन पे लैपटॉप पे हो या बैठे हो या आप ड्राइव कर रहे हो, किसी भी पोजीशन पे जस्ट मेक श्योर कि आपका, और डोंट फिक्स दिस कि आपको ऐसे ही बैठना है. ऐसा नहीं कि नेक बेंड करते आपको पेन हो जाएगा या हाथ ऐसे किया तो आपको पेन हो जाएगा. ये आप जब करते रहोगे, द ड्यूरेशन मैटर्स. अगर हम, बिकॉज अब हमारा नेक का जो एंगल है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेंड ही रखते हैं, तो इस वजह से होता है. सो नाउ द मेडिकली आपको मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम्स कहाँ आती है. सो व्हेन योर नेक इज बेंडिंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल हमारी नेक पे अभी लोड कुछ भी नहीं आ रहा, द मोमेंट वी बेंड 15 डिग्रीज, द अमाउंट ऑफ लोड कम्स टू आवर नेक इज 8 kgs. हर 15 डिग्री पे 8 kgs बढ़ा दो, हर 15 डिग्री पे 8 kgs. बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वी यूज स्मार्टफोन लाइक दिस ऐसे, व्हिच इज 45 to 60 डिग्रीज.
and if you can multiply this comes, आपको यहाँ पे load आता है 15 into 4 sorry 8 into 4 which is 32 kgs, more than 30 kgs का आपका load आता है यहाँ पे neck पे. उसकी वजह से जितनी भी मसल्स हैं they have to work very very hard to support your neck, right? So that's how this neck pain occurs. तो इसलिए सिंपल सा है, जितना आप नेक को स्ट्रेट रखोगे, आई लेवल पे रखोगे, हर चीज को पढ़ाई वढ़ाई को जो भी कुछ कर रहे हो, जितना आपका स्क्रीन पे ज्यादा रहेगा, आपका नेक स्ट्रेट रहेगा, उतना चांसेस आपके नेक, जितना आप नेक बेंड करते रहोगे तो चांसेस ऑफ नेक पेन विल इंक्रीज. आप समझो कि जितने आप नेक बेंड करते जा रहे हो, आप एक स्टेप क्लोजर जा रहे हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से. सिमिलर, राइट? सो फॉर एग्जांपल if you are using your smartphone, if you are driving और आप कुछ भी काम कर रहे हो, so be very very conscious of your neck postures. So आपको ये बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? इसी से आप बच सकते हो. So ये अगर आपको जिम करते समय, एक्सरसाइज करते समय आपको कुछ पेन वगैरह हो रहा है, so then it's a different pain altogether because it might be because of some stiffness और कुछ भी. So ये नेक का सिम्टम्स नहीं हो सकते. बट हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मे बी हेड स्टैंड कर रहे हो, या काफी लोग ये नेक रोटेशंस करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सो आई जनरली से नो टू देम बिकॉज वो हमारा डिस्कशन होता है कि लाइक हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज तो है. सी एक्सरसाइज तो पहले भी ये थी और हम बॉडी भी बहुत पहले, ये अभी भी सेम बॉडी है. बट व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग, व्हाई पीपल आर आस्किंग सो सिंपल क्वेश्चंस की पिलो कैसे यूज करना है, हम बैठना कैसे, पढ़ना कैसे है. सो सब कुछ पहले हो रहा था ना. अब व्हाई दीज क्वेश्चंस आर कमिंग, बिकॉज लाइफस्टाइल हैज बीन चेंज्ड, प्रॉब्लम्स हैज बीन चेंज्ड, द सॉल्यूशन विल बी चेंज्ड, राइट? सो राइट वे ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज इज सेमी सर्कल में नेक रोटेशन करो. अदरवाइज आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो यू विल फील डिजी, यू विल फील वर्टिगो, आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाने चांसेस है. 10 में से 7 लोगों को ये प्रोबेबिलिटी ये होता है, ठीक है, वेदर दे हैव सर्वाइकल और नॉट, ठीक है. सो ये हो गया हमारा सर्वाइकल का, राइट? सो बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम we'll discuss cervical neck pain and back pain बिकॉज यही एक ही टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है और यही 2 टॉपिक हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं जो लोग बहुत ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं, राइट? नाउ आपको क्या क्या नहीं करना इफ आई टॉक अबाउट नेक से बचने के लिए. सो स्मार्टफोन सबसे बड़ा कारण है. सेकंड इज द लैपटॉप is the another reason of having this neck pain, and last is the your any desktop. So इसलिए 30 साल if you go 30 years back, लोगों को डेस्कटॉप यूज करते थे तो डेस्कटॉप स्ट्रेट रहता है, हमारा आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, रेस्टेड रहते हैं. सो हमें को काफी कम लोगों को प्रॉब्लम होती थी, राइट? नाउ बिकॉज उसमें स्क्रीन टाइम बड़ा था, स्क्रीन टाइम कम था, स्क्रीन साइज बड़ा था, हमारा नेक का एंगल स्ट्रेट था, ये सही था. 10 years बैक जब लैपटॉप की बात आई थी तो लैपटॉप में क्या हुआ था? सो लैपटॉप के टाइम स्क्रीन साइज कम, स्क्रीन जो एंगल है वो नीचे चला गया, हमारा और नेक का एंगल बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया, और हमारा जो एंगल है हाथ का ऐसे होना, ऐसे टाइप करते हैं लैपटॉप पे, राइट? हमारे जो चांसेस ऑफ सर्वाइकल के हैं, जो लोगों की परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गई. नेक्स्ट कम्स इज द स्मार्टफोन. स्मार्टफोन एरा में क्या हुआ? स्क्रीन साइज बहुत ज्यादा कम हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड योर एंगल ऑफ नेक इज टोटली वेंट डाउन. उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और हैंड की बहुत ज्यादा पकड़ने की वजह से, बहुत देर तक पकड़ने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई. सो दिस इज द era. I mean, that's how this problems is increasing, and it's increasing day by day, or it's increasing in all age groups because बच्चों को ज्यादा हो गया. So kids are the right kids should understand first, because होता क्या है कि we do not see this very seriously till the time we suffer from any kind of pain. So it's better कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लो और start correcting yourself, right? So this was all about the neck, this was all about the cervical problems.
So we'll talk about the exercise part later. Before we head to this what do you call back pain, what are the mistakes which people do? So let's understand that. So one is, let's say let's talk about smartphones. So smartphone पे चलते चलते आप टेक्स्ट कर रहे हो, so उसके चांसेस हैं आप डिजीनेस वर्टिगो होने के, राइट? अगर आप ड्राइवर ओला उबर में पीछे बैठ के आप स्क्रॉलिंग और टेक्सटिंग कर रहे हो, अगेन डोंट डू दिस, बिकॉज आपको चक्कर आना और सर्वाइकल के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? सो ये मिस्टेक मत करो। आजकल तो आप देखोगे, यू जस्ट ऑब्जर्व, जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, जब भी आप कहीं पे भी रोड पे देख रहे हो, तो आप 10 कार्स में से लेट्स 6 to 7 कार्स होंगी जिसमें से जो चला रहा है कार, वो एक हाथ में टेक्सटिंग, एक हाथ में फोन है, एक हाथ से ड्राइव कर रहा है। This is what I have observed. So people are so obsessed with the smartphones कि उनका इतना important काम है, I don't know. So this is a safety point of view कि आप ड्राइव भी कर रहे हो, आप टेक्स्ट भी कर रहे हो. It's better to invest on the smartphone stand and put it over there. It won't cost you more than 150 से 150 से 1000 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन स्टैंड आ जाते हैं. You can put it over there. ओला उबर ड्राइवर्स सब करते हैं, राइट? बिकॉज उनको ईजी होता है, राइट? सो उसका लगाने का भी एक तरीका है, उसका लगाने का एक डिस्टेंस भी है, अदरवाइज अगर काफी देर करोगे तो यू विल फील सम टेंडरनेस, ठीक है? सो दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर. सो ये सब नहीं करना आपको. सोने से पहले आपको स्मार्टफोन नहीं यूज करना, एटलीस्ट 1 hour बिफोर, राइट? इट विल डिस्टर्ब योर स्लीप, इट विल डिस्टर्ब योर आईज, राइट? सो आईज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सो डोंट डू दिस 1 घंटे पहले. और देख भी रहे हो तो एटलीस्ट लाइट्स ऑन करके देखो और थोड़ा सा ब्राइटनेस उसको कम करो. मैंने काफी बार देखा है कि लोगों की स्मार्टफोन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा हाई होती है. सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर आईज, ठीक है? सो डोंट डू दिस, ओके? नाउ काफी लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, आई मीन कंफ्यूजन है कि कब आइस पैक लगाना है, कब हॉट पैक्स लगाना है, ठीक है? सो आइस पैक आपको तब लगाना है जब आपको स्वेलिंग है कहीं पे भी, ठीक है? लेट्स सपोज आपको यहाँ पे कहीं स्वेलिंग है, यहाँ पे कहीं स्वेलिंग है, या बैक में कहीं स्वेलिंग है, नी में है, एंकल में है, या मे बी कहीं पे भी किसी भी जॉइंट में आपको स्वेलिंग है, तो जस्ट अप्लाई आइस पैक फॉर 1 to 3 days, 2 to 3 times, ठीक है? फॉर 10 minutes. अगर आपका किसी का एंकल स्प्रेन हो गया, किसी का कुछ भी स्प्रेन हो गया, या सो देयर यू कैन यूज आइस पैक, राइट? और हॉट पैक्स कब करना? जब आपको स्टिफनेस फील हो रहा है, जब आपका टाइटनेस, बॉडी में स्टिफनेस है, टाइटनेस है, नेक इधर से उधर मूव नहीं कर पा रहे हो, या आप नीचे बेंड नहीं कर पा रहे हो, सो देन यू कैन स्टिल यूज हॉट पैक्स जस्ट टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो. ये सिंपल वे में बता रहा हूँ. अदरवाइज जब भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं ये फॉलो करता हूँ. आई टेल टू ऑल माय पेशेंट्स कि जब भी आपको कंफ्यूजन है, जस्ट गो फॉर आइस पैक. सो आइस पैक इज स्टिल सेफर देन हॉट पैक्स in all the cases, unlike hot packs, okay? So now, these were the mistakes and excess, all about cervical and smartphones. So smartphone alone, it's very big topic. So I take sometimes I can speak about smartphone for 7 to 8 hours, but let's talk about now about this back pain. So बैक पेन क्यों बढ़ रहा है सबसे ज्यादा, अदर देन सर्वाइकल? सो सर्वाइकल और बैक पेन की रेस सेम चल रही होती है, सो दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं. सो सबको ऐसा नहीं है कि ज्यादा बैक पेन हो रहे हैं, कम सर्वाइकल हो रहे हैं. सर्वाइकल पेन एंड बैक पेन गोज 60-40 का रेशियो होगा, आई थिंक 60% सर्वाइकल एंड 40% बैक पेन. या समटाइम्स you can talk, 55% ऐसे होता है. So now the main culprit of back pain is back pain. I'm talking about lower back pain, not the upper back pain. Upper back pain बहुत कम लोगों को होता है, but lower back pain, okay? So lower back pain, the main culprit is, जैसे cervical का main culprit आपको मैंने बता दिया, smartphones and laptops and all the gadgets, and लोअर बैक का मेन कल्प्रिट है जिसपे मैं अभी बैठा हूँ, विच इज द चेयर्स, ठीक है? सो बिकॉज हम चेयर्स पे सबसे ज्यादा बैठते हैं, चेयर्स पे हम वी स्पेंड 8 to 10 hours a day, right? So that's how we have to understand the importance of chairs.
So thanks to COVID, people have understood, but still people haven't got a good chair for themselves. Still अच्छे phones ले लिए, अच्छी cars ले लिए, but chairs पे invest नहीं करा because importance नहीं पता चल रहा. You can't show off your chairs. आप दिखा नहीं सकते हो चेयर्स को कि कौन सी चेयर है, ये बहुत एक्सपेंसिव चेयर है या सस्ती चेयर है. You can't show off, right? But if I talk about आप 8 घंटे बैठते हो और 8 घंटे सोते हो, so these are the two areas you have to invest a good amount of money. अच्छे से लोगों से कंसल्ट करो, किसी भी कंसल्टेंट से कंसल्ट करो कि कौन सी चेयर अच्छी है, कौन सी चेयर, कौन सा मैट्रेस अच्छा है उनके लिए, राइट? बिकॉज यही दोनों एरियाज हैं जहाँ की आपकी 30% ऑफ लाइफ गोज. 8 घंटे इंटू अगर आप 365 इंटू 60 years करोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी लंबा टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. सिमिलरली गोज विद योर स्लीपिंग. ओके, so there you have to understand the now you understood the importance of chairs. तो चेयर्स को अच्छे से खरीदो. कौन सी चेयर खरीदनी है, डोंट गो बाय कि हाँ चीप सस्ती चेयर. इट्स नॉट अबाउट सस्ती और महंगा, इट्स अबाउट the way you use that particular. As I said in the beginning, during the introduction, ergonomic product तो सारे होते हैं. एक 200 रुपए का प्रोडक्ट भी है, 2 लाख का भी प्रोडक्ट है, बट आप उसको कैसे यूज करें वो भी आपको आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ये चेयर अगर if I give you a chair of rupees 2 lakhs and still you have a habit of sitting like this, slouch करके गलते ऐसे बैठ गए या वैसे बैठ गए, तो you definitely will have the problems. So उस product कुछ नहीं करेगा ना उस टाइम. So you have to understand कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, आपकी बॉडी को कैसे आपको तरीके से बैठना है, तरीके से you have to understand कि आपको कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है. So this is all about the postures. So आपको posture is very very important in this way. ठीक है. So chairs को अच्छे से खरीदो. For example, आपको छोटे से टॉपिक 5 पॉइंटर्स बता सकता हूँ. अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हो तो ले रहे हो तो आपको हेड रेस्ट जरूर लेना चाहिए, because you can rest. You can't work like this, but still if I wanted to rest, I can rest. ठीक है. आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बेंड अप कर सकते हो. आर्म रेस्ट एडजस्टेबल होने चाहिए, ऊपर नीचे हो जाएगा. ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा. देन आपका बैक रेस्ट, आपका जो ये अगर मैं खड़े होकर दिखाऊं तो आपको अगर चेयर दिखेगा, सो इसमें जो लोअर बैक को सपोर्ट करने के लिए स्पाइन शेप है तो वो होना चाहिए, सो दैट यू कैन टर्न एंड देन this back will be supported. Then you don't need extra support for your lower back, because ये inbuilt होता है. आपका जो जिस सीट पे बैठते हो वो आपका हाई डेंसिटी फॉर्म सीट होनी चाहिए, so that you can sit comfortably. आपको पेन नहीं होगा. ठीक है. So then so आपका जो शार्प बैक ऑफ द नीज, जहाँ पे जो चेयर का एज है वो शार्प नहीं होना चाहिए, वाटरफॉल एज होना चाहिए, so that it should not hurt your knees, back of your knees. So छोटे से ये पॉइंटर्स हैं. आपको ये सोच के ये देख के आप, और ऑनलाइन मत खरीदो. it's I highly recommend कि आप ऑफलाइन जाके खरीदो, so that for example वहाँ पे 10 ऑप्शन है, आप 10 में आप प्रैक्टिकल यूज करके देख के बैठ के then you can decide कि मेरे को कौन सी कंफर्टेबल लग रही है. So similarly goes for the mattress. ऐसा नहीं ऑनलाइन खरीद लिया. So it's better कि आप जाओ और देखो, because one size doesn't fit for all. अगर मेरे को वो ये चेयर कंफर्टेबल है तो might not be comfortable for you. ठीक है. So don't make this mistake. So now so this is the major cause of the back pain. अब दूसरा कॉज क्या है? While working from home, people have a habit of कि चलो ठीक है वर्क फ्रॉम होम है तो चलो हमें एक सिंपल सा हमें ये पता चल गया कि चलो ठीक है थोड़ी देर हम चेयर पे बैठे हैं. आधे लोगों के पास तो अभी भी चेयर्स नहीं है, काफी लोगों के पास, आई वुड से 40% लोगों के पास अभी भी चेयर है. ठीक है. Now sometimes people sit on the bed and sometimes people sit on the couches, recliners, bean bags, sofa, dining table. But इसमें सबसे worst पता क्या है? Bed. So don't sit on the bed, because होता क्या है, most of the काफियों के घरों में ना बेड है वो 90 डिग्रीज वाले हैं ऐसे. ठीक है. So you can't support back and neck at the same time, because आपका 90 डिग्रीज पे you can't sit, and you should not sit 90 डिग्रीज.
ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी कार की जो सीट होती है, आपकी कार की सीट जो बाय डिफॉल्ट कौन से डिग्री पे होती है, 100 डिग्रीज पे, नॉट 90, ऐसे नहीं आती ना आपकी कार की सीट। आपकी कार की सीट आती है ऐसे आती है, राइट, यू रिक्लाइन लिटिल, नॉट 90 डिग्रीज, ठीक है। सो सिमिलरली आपको वो आपका सीट हल्का सा आपको रिक्लाइन करना है। सो आप उसमें क्या करोगे, अगर आपने रिक्लाइन कर लिया, आपने सपोर्ट कर लिया लोअर बैक को, और आपने नीचे अपने चेयर्स और जो बेड टेबल है आपने वो रख लिया, लैपटॉप पे काम कर रहा, नाउ यू हैव सपोर्टेड योर लोअर बैक बट नॉट द नेक। अब आपको नेक पेन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बट सिंस यू हैव रिक्लाइंड, स्लाउच कर दिया, और आपको सिंस स्टिल यू हैव सपोर्टेड योर लोअर बैक, बट चांसेस हायर है कि आपको बैक पेन हो जाएगा, बट कम होगा, चांसेस कम है, बट डेफिनेटली होने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप बैक को सपोर्ट नहीं करते हो, स्लाउच कर रहे हो, तो नेक को भी सपोर्ट कर देते हो, तो बैक गया, तो इट मींस इन शॉर्ट द बैक इज नॉट द गुड ऑप्शन, बेड इज नॉट द गुड ऑप्शन। उसके लिए वेज पिलोज आजकल आने लगे हैं, सो यू कैन आई मीन यूज दोस, so that's how you can correct your this back issues. Okay, now you since you have understood the importance, so अब क्या होता है कि सेटिंग की वजह से बैक पेन हो रहा है। चेयर्स एक ऑप्शन है, बिकॉज चेयर पे हम सबसे ज्यादा बैठते हैं, या हम जो ऑफिस में सबसे ज्यादा बैठते हैं, तो चेयर इज वन ऑफ द ऑप्शंस, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बैक पेन। ड्राइविंग बहुत ज्यादा होता है, किसी का कोई ड्राइव बहुत ज्यादा कर रहा है, किसी का स्टैंडिंग बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी गार्ड का हो सकता है, राइट। एंड अदर कॉजेज कैन बी द मैट्रेस, ठीक है, अदर कॉजेज कैन बी जैसे सॉफ्ट मैट्रेस होते हैं होटल्स में, अदर कॉजेज कैन बी लोअर बैक के वीक एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में, डेड लिफ्ट कर रहे हो, या कोई भी ऐसी डिफिकल्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस है, राइट। So these were the causes of the neck pain, so don't do these mistakes, okay. Now जैसे मैंने नेक के लिए बताया था, ऐसे लिए कि इतने एंगल पे इतना प्रेशर आता है, इतने एंगल पे इतना प्रेशर आता है, सिमिलरली लोअर बैक पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है जब हम बैठते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस द मोमेंट वी सिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, तो ज्यादातर लोग कैसे बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं एंड ऐसे बेंड करते हैं, लैपटॉप पे ऐसे यूज कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। सो 90 डिग्रीज के लेस, 90 डिग्री से कम एंगल पे बैठोगे तो आपका बैक पेन बढ़ेगा, बैक पेन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप 90 डिग्री से पीछे जाओगे तो बैक प्रेशर ऑन योर स्पाइन विल बी लेस। तो आपको देखना है आपको कहाँ जाना है, आपको पेन किलर्स या फिजियो सेशंस कराने हैं तो आप आगे करके बैठो, अगर आपको बैक पेन बचना है तो आप पीछे होके बैठो, सिंपल, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, okay. So sometimes people get up suddenly from the bed, तो ये वाली हैबिट सिंपल सी हैबिट है, so always get up sideways, ठीक है, suddenly मत उठो, ठीक है। so सुबह उठते ही हम try to touch our toes, so वो मत करो, because muscles are tight, ठीक है, the chances of slip disc will increase अगर आप सुबह उठते ही toe touching करोगे, ठीक है। So there is a way of doing toe touching, ठीक है। So वो एक अलग practical session है, but toe touching still मत करो, थोड़ा सा वार्म अप कर लो, फिर भी still आप कर सकते हो, but don't do all of a sudden जब भी आप उठोगे। Similarly जब आप travel कर रहे हो, for example यहाँ से US जा रहे हो, या बहुत लंबी ट्रैवल है, या यहाँ से कार में भी जा रहे हो, ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि हम फ्लाइट से ही, ट्रैवल का मतलब हम अगर ड्राइव करके या बैठ के भी जा रहे हैं 2, 4, 5 घंटे, तो अगर आप वहां पे जाके ऐसे नहीं उठ के आप सीधा टो टचिंग करोगे, सो डोंट डू दिस, ठीक है। अगेन, सो योर बॉडी शुड नॉट बी इन वन पोजीशन फॉर मोर देन 1 आवर, 45 to 1 आवर। जितनी ज्यादा देर बैठोगे उतना आपका बॉडी में ब्लड फ्लो कम होगा, उतनी ज्यादा आपका स्टिफनेस बढ़ जाएगा, एंड एसी विल डू द वंडर्स, और ज्यादा स्टिफ कर देगा। तो इट्स बेटर कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता रहे। ब्लड फ्लो कब इंप्रूव होगा? जब आपकी बॉडी मूव होती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज नाउ। सो हमारी लाइफ, हम बहुत ज्यादा स्टिक हो गए, हम बहुत ज्यादा बैठने लगे, हम बहुत ज्यादा एक ही जगह पे, और वर्क फ्रॉम होम की वजह से और ज्यादा हो गया, और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ गए जिसकी वजह से हम और कुछ नहीं करते। एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, एलेक्सा डू दिस डू दैट, सो डोंट डू दिस।
सो कुछ मेड्स आ गई, किसी के घर में बहुत सारी मेड्स हैं, सो ट्राई टू डू ऑल योर स्टफ ऑन बाय योरसेल्फ जितना हो सके। अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो ये उनके लिए स्पेशली। अगर कोई रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं देन डेफिनेटली आई एम नॉट अगेंस्ट योर डोमेस्टिक हेल्प, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि let me just give you where I'm coming from. So my clinic is on second floor, so most of the people take lift ऊपर जाने के लिए भी, नीचे उतरने के लिए भी, and these are all young people, ठीक है, and many of the people come from walk-in societies in the cars, so it's better, और ये वही लोग हैं जिनको बैक पेन है, वही लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स है, so it's better they have to understand कि हमें एटलीस्ट इतनी देर तो पैदल चलना है, 2 फ्लोर ही हैं तो एटलीस्ट वी शुड, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हम स्टेयरकेस लेना चाहिए। सो हमारे सो वी हैव टू बी माइंडफुल, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, यू हैव टू बी माइंडफुल कि हम कितना हम कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, कितना नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सो बिफोर आई थिंक it's 7:50, let's talk about now, let me just give you some simple exercises where you can understand, you can help your body to ease out from this pain. So number 1 मैंने बता दिया आपको, neck rotations नहीं करने, clockwise anti clockwise, just do sideways semicircle, okay? Now next is the exercise would be shoulder rotations, ठीक है? एटलीस्ट जब भी आप बैठे हो आपके पास इतना टाइम तो होगा कि 1 सेकंड 10 सेकंड निकाल सकते हो और ऐसे ही कर सकते हो। इन द मीटिंग्स आल्सो यू कैन डू दिस। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपकी बॉडी में मूवमेंट लाना है, दैट्स इट। द योर बेस्ट, द फेमस कोट इज योर बेस्ट posture is your next posture, okay? So now similarly, so the next exercise is which is my favorite one. आप अगर आप ये फॉलो करोगे, रेगुलरली करोगे, जब भी आपको मौका मिले, चाहे ड्राइव करो, सो मैं ड्राइव करता हूँ तो जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तब भी मैं कर लेता हूँ, जब मैं बैठा हूँ तब भी मैं कर लेता हूँ। सो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, यू विल फील सम, let me just put on this, yeah, so this is very effective exercise। करना क्या है, so imagine there is a pen यहाँ पे, ठीक है, and pen you have to grab, hold that pen as tightly as possible and pen should not fall, ठीक है, ऐसे, ठीक है। So you'll feel some cracking sound, twitching, कहीं कुछ आपको कुछ आपको फील होगा। So that sound will is a sound of stiffness, so that's how धीरे-धीरे आप stiffness उसको दूर कर रहे हो, अपनी बॉडी के stiffness आपको दूर कर रहे हो। So the more you will hear this sound, इसका मतलब आपको stiffness है। So जब भी आप ये करोगे, ऐसे सिंपल बैठे बैठे कर सकते हो, बहुत इजी है, you will feel the difference। आपको पता चल जाएगा। डे 1 अगर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आप दिन में 5-10 बार 50 बार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होल्ड इट फॉर 2 to 3 सेकंड, दैट्स इट। होल्ड करके नहीं रखना, दैट्स इट, ठीक है। एंड डू इट नंबर ऑफ टाइम्स। आफ्टर अ वीक यू विल फील आपको आवाज कम आना स्टार्ट हो गया, एंड देन आपका जो नेक की मूवमेंट है बहुत ज्यादा फ्री हो गई है, ठीक है। whatever you are doing, continue doing those exercises। अगर योगा कर रहे हो, continue doing those exercises, ठीक है। अगर पेन होता है तो रुक जाना, बट हाँ, continue doing those exercises। next would be trapezius stretch, which is आप ऐसे करो, हाथ को ऐसे लेके जाओ and then pull it like this, okay, yeah, something like this, ऐसे कर सकते हो, simple, okay, like this, right? So this was a tricep stretch, ठीक है, just to ease out your triceps। and trapezius stretch will be आपका जो neck है यहाँ पे सबसे ज्यादा यही टाइट होता है, ठीक है। once you have relaxed this muscle, now it's time to improve the range of this and increase the blood flow and lengthen this muscle। तो करना क्या है, आप चेयर की, यहाँ पे चेयर पे आप ऐसे भी कर सकते हो, चेयर को ऐसे पुल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। This is one way of doing this। Otherwise simple, आपको hand को ऐसे रखना है, bring your right ear to your right shoulder and you will feel the stretch on your opposite side। Hold it for 10 seconds and relax। Repeat with other side, ऐसे दोनों साइड से करना है। and इसमें आपको क्या करना है, 3 to 5 times करना है, और हर स्ट्रेच को आपको मिनिमम 10 seconds होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि आपने ये किया फिर खत्म, ये भी किया। So बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं करना, just hold it, at least hold it for few seconds, minimum of 10 seconds, okay।
So this was for trapezius. Now जो आपका पीछे पेन होता है back of this area, so which is the rhomboids, आपको ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे stretch करना है, hold it for 10. This is a one arm hug, simple, ठीक है, like this. So these are the exercises which I am talking about, which you can do while sitting. कहीं खड़े होने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको मीटिंग है, कुछ भी है. I know मीटिंग में आप ये नहीं कर सकते, but at least आप बैठे बैठे ये तो कर सकते हो, ठीक है. The idea is to body should move. Next would be आपको ऐसे रखना है हाथ, right, ऐसे, and then side stretch. You will feel the stretch on your sides. So this will ease out your back pain. सबसे ज्यादा जब बैक पेन होता है तो हमारा ये साइड टाइट हो जाती है, and then that's how काफी लोगों को ऐसे कई बार टेढ़े हो जाते हैं because of one side of tightness of the muscles. So आप simple ये करो, and then sideways and sideways, hold it for 10 seconds, then relax, ठीक है. So this is how you can do this exercise. Last and very very important, which is अगर आपके पास टाइम ना हो और आपको बताना नहीं है किसी को, और आप मीटिंग में हो, आपके उठने का भी टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, so one of the best exercise which you can do is बैठे हो सिर्फ, I don't know whether you can see this or not, let me just try. So आपको, आप ऐसे बैठे हो, so आपको just ऐसे रॉक करना है, pelvic rocking movement. This is known as pelvic rocking movement, like this, ठीक है. So simple, बैठे बैठे आपको एटलीस्ट ये कर सकते हो. So just try to move your pelvis. So इससे क्या होगा कि you are moving your pelvis, reducing the stiffness around your lower back and improving the mobility around the lower back. So this is how you can improve your back pain, ठीक है. So these were the exercises I've talked about. Simple tips and causes, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या what all you can do, कौन सी exercise गलतियां नहीं करनी है, ठीक है. So we have talked about everything, which is, I mean, chairs and mattress and everything, right? And last and but not the least, very important, आपको सबसे ज्यादा ध्यान वो भी रखना है कि other thing, let's say keep hydrating yourself, पानी ज्यादा पियो, ठीक है. बिकॉज अभी समर्स है, तो समर्स में हम एसी चलाते हैं, एसी की वजह से हम we tend to sweat, we do not sweat, and because of this हमारा stiffness बढ़ता रहता है, and that's how body needs lot of water to, I mean, exceed the stiffness, ठीक है. तो पानी ज्यादा पीना है, मौका मिले तो सनलाइट लो, ठीक है, एक्सपोज करो बॉडी को, so that you can improve your sunlight. अगर आप few tips like something like, अगर आपका ऑफिस ऑफिस 5th फ्लोर पे, तो स्टार्ट टेकिंग 2 फ्लोर की लिफ्ट लो, एंड देन बाकी का स्टेयरकेस से हो, ठीक है. तो पार्क थोड़ा सा दूर कर लो, आप वहाँ पे प्रिंटर के पास जा सकते हो, ठीक है. ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ द स्टफ ऑन योरसेल्फ, ठीक है. किसी को टेक्स्ट मत करो, आप आई मीन उसके पास जाके बात कर सकते हो. स्मार्टफोन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं. अगर आपका कॉलिंग का सबसे ज्यादा काम है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इनटू द सेल्स, तो आप इट्स बेटर टू हैव अ हेडफोन्स रादर देन आप फोन ऐसे रख रहे हो एंड देन यूजिंग कंटिन्यूअस ऐसे या ऐसे रख रहे हो. इट्स बेटर टू यूज दीज इक्विपमेंट्स, आई मीन ईयर पीसेस, ठीक है, हेडफोन्स. नेक्स्ट सिंपल टिप्स व्हिच आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ इज, स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा नेक का बेंड होती है व्हेन वी टेक्स्ट, ठीक है. तो ट्राई टू यूज योर स्मार्टफोन स्मार्टली, ठीक है. उसके लिए एज आई सेड, स्मार्टफोन मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है. सो क्विकली स्टार्ट टू यूज स्मार्टफोन जो टेक्सटिंग का है. सो स्टार्ट टू वॉइस आउट एंड गूगल विल टाइप, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है. You can write your emails, you can write your messages, anything you can, I mean, take a help of Google. Okay, Google, call this person. Okay, Google, call this person. Okay, Google, send this WhatsApp. Okay, Google, essay. Yeah, if you are using Android, if you're using smartphone and Siri, Apple, ठीक है. So ऐसे आप use this frequently, and you will enjoy this. तभी आप अपना फोन भी एंजॉय कर पाओगे जो आपने बहुत महंगा खरीदा है. तो इट्स बेटर कि आप उसे
so effectively use karo. So that was all my from my side. Lastly, I would like to say posture requires discipline, and thank you so much, Nitin, for this opportunity. I hope people understood, and so this was all my time. Thank you so much. Dr. Saab, people understood me. People loved it. People just loved it. It was ball right out of the park. Friends, let me know in the chat box how was the session. And let's give Dr. Dipankar a round of applause for this amazing session. Dr. Saab, thank you very much. You've really shown us the way how we should be using our smartphone. And there is a reason why we call it smart, right? I think phone to smart हो गए, हम उतने smart नहीं हुए. तो वो आज आपने बताया कि कैसे हमें भी स्मार्ट होना है उन्हें यूज करने के लिए, which was really good. Friends, let me know in the chat box how was this session. I found it really amazing. I was taking my notes, and I would love to hear from all of you who were attending it live. How was the session? Now look at that, Dr. Saab. Excellent, wonderful, amazing. Thank you very much. Useful tips, awesome session, and whatnot. It has absolutely been an amazing, insightful session. Now, कुछ जल्दी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, with your permission. डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे चेयर पर बैठते हैं, तो आइडियल हाइट क्या है चेयर की? पैर पूरा, योर फुट शुड रेस्ट ऑन द फ्लोर, और या फिर ऐसे आपके टच होना चाहिए या हवा में झूलना चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल हाइट ऑफ द चेयर, बिकॉज़ वी कैन एडजस्ट दैट. जस्ट वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. So first is हवा में तो झूलना बिल्कुल नहीं चाहिए, because it will increase the swelling. जैसे हम ट्रैवल भी करते हैं तो हमारे feet has to be flat on the floor. Right. ठीक है, तो वो टच होना चाहिए. This is one, and there is no exact height. It depends on person's height. So simple, जब भी आप बैठोगे तो make sure you sit on the 90 degrees. ठीक है, your knees has to be bent at the 90 degrees. Right. और उसके अकॉर्डिंग आप you can adjust your height. So I just generally do this in my corporate sessions. 4 steps how to set up your workstation properly. So this is number 1, 90 rule, which is your hands has to be 90 degrees, your hips has to be 90 degrees, and knees has to be approximately 90 degrees. Right. Okay. So the second step, come closer to the workstation, CCW. Come closer to the workstation so that you don't have space to bend forward. Okay. So this is number 2. Number 3 is your screen has to be at your eye level, which I've already spoken about. And number 4, which is very, very important, the screen and distance of the screen between your eyes and the ears has to be arm's length. Right. काफी लोगों का स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर होता है तो they have to tend to see like this. और काफी लोगों का बहुत पास में होता है तो eyes. So these were the 4 steps to set up your workstation ergonomically designed. I'm sure it was. I'm sure everybody will find it informative. This specifically, this answer, क्योंकि दोस्तों चेयर पर जब हम पूरे दिन बैठते हैं तो वो सिटिंग पोस्चर जो आपका चेयर पे है उसका सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और डॉक्टर दीपांकर, a lot of times people, on their workstations when they're sitting on their respective chairs, they sit cross legs. तो ये cross legs बैठ के काम करना, what's your thoughts on that? So as I said, do not sit in one position for more than 1 hour. If they are sitting for few minutes, तो ठीक है. और if they have a habit of sitting cross legs, तो बहुत गलत है कि बेड पे बैठे. For example, if I talk about girls have a habit of sitting cross legs. Most of the time, girls जैसे ही वो चेयर पे बैठती हैं, क्रॉस कर देती हैं. Now this has become a habit of them. तो उसकी वजह से एक लेग में नमनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, नीज में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा जिसके ऊपर नीज है. ठीक है. So this is another habit. लेकिन चेयर पे अगर हम बैठते हैं क्रॉस लेग्स जस्ट टू रिलैक्स समटाइम्स तो ठीक है, लेकिन अगर हैबिट बन गया तो बहुत प्रॉब्लम है. लेकिन क्रॉस लेग्स बैठने के बाद यू एनी व्हिच वेज यू कांट सिट लाइक दिस, यू हैव टू टेंड टू बेंड फॉरवर्ड. उसकी वजह से बैक पेन हो जाएगा. जी, इसलिए सही तरीके से बैठना जरूरी है. और डॉक्टर साहब, फ्यू मोर क्वेश्चंस. जैसे आजकल एक्सप्रेसवेज बन गए, हाईवेज बहुत शानदार बना रही है गवर्नमेंट, तो लगता है यार ये रहा ना, अभी 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, अभी 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, क्या ब्रेक लेना है ना, अभी कुछ खा के बैठते और अभी पहुंचे 4 घंटे में, 3 घंटे में. तो ऐसे केसेस में ये जो समय बचाने की जो एक इच्छा रहती है और आप लंबी ड्राइविंग हम कर जाते हैं, इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? So I think
Again, this is not good because whether you the journey is smooth, whether the journey is in your SUV, luxury जी, SUV, जी, still body will be the same. right. I don't know कितनों ने सुना है, एक BMW में एक बंदा था and he was driving and he was wearing this tight jeans and उसको कुछ heart problem हो गई थी when he landed to Chandigarh and Chandigarh is hardly 5 to 6 hours journey. Right, ठीक है? right. So that's how. Just imagine with the BMW and what will happen if you. I mean, it's not nothing to do with the car, nothing to do with the. This luxury car or more Right. simple car. It's about Right. कि आप every 100 kilometers or maybe 1-2 घंटे के बाद एटलीस्ट ब्रेक लो. ब्रेक में कहीं पे भी रुक रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो. और जो स्ट्रेचेस मैंने नहीं बताई जैसे टो टचिंग वो नहीं करना, सिंपल से स्ट्रेचेस करने. एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. ऐसा नहीं कि 4 लोग ड्राइव कर रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, जिसको बैक पेन है वही करेगा, जिसको नेक पेन है वही करेगा. आई मीन सब करेंगे, इट्स बेटर कि उनको नहीं होगा. जिसको है वो तो करना ही करना है और जिसको नहीं है एटलीस्ट वो उसको ना हो तो इसलिए वो करेगा. एब्सोल्युटली, इंडीड. और डॉक्टर साहब, ये जब से कोविड हुआ तब से बच्चों की बड़ों को तो ये प्रॉब्लम था ही, सिस्टम, डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन और ये सब. ये छोटे छोटे बच्चे भी इन चीजों के लिए इंट्रोड्यूस हो गए कि बेटा ऑनलाइन स्टडी. और अब ऑनलाइन स्टडी वो ऐसा हुआ कि अब होमवर्क काफी ऑनलाइन है, प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन हो रहे हैं, काफी चीजें ऑनलाइन हो रही है. तो पेरेंट्स जनरली, मैंने जो जनरली ऑब्जर्व किया है, दे गिव टैब्स, आईपैड्स दे दिए, टैब्स दे दिए बच्चों को. अब वो टैब्स बच्चा टेबल पे ही रखता है उसे और फिर वो स्टडी करता है उस टैब पर. तो स्पेशली मैं चाहता हूं कि आप पेरेंट्स को, आई वुड लाइक यू टू से समथिंग. what is your suggestion? How should these kids be using tablets for their studies? और वहां पर आपकी कुछ अगर suggestions हो तो please, that would be great. So it's a human tendency. Most of the time people buy these expensive stuff. ठीक है? But when it comes to स्मार्टफोन का कवर तो वो 100 रुपए का खरीदेंगे. तो इट्स बेटर जब आप स्मार्टफोन टैबलेट खरीद रहे हो कुछ भी, तो उसके साथ एक स्टैंड खरीद लो, समथिंग लाइक दिस, सिंपल. कितने के आते हैं, राइट? सो मेक श्योर कि मैंने काफी बार देखा है बच्चे इतना, एक तो टैबलेट्स आर नॉट लाइट, टैबलेट्स आर वेरी हैवी. ठीक है? सो होता क्या है कि जब भी आप टैबलेट रखोगे हाथ में तो आप यू टेंड टू बेंड, आई मीन आपका हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, नमनेस होना स्टार्ट हो जाएगा. There was one girl, she was only 11 years old, और उसने न्यूरो को दिखा दिया, ऑर्थो को दिखा दिया, और काफी बार उसको या नमनेस होना स्टार्ट हो गया at the age of 11. Just imagine, at the right hand. और nobody could understood कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है. MRI तक भी हो गया. Just imagine, at the age of 11 she was she have done the MRI. So the only problem was she used to use this tablet from the holding the tablet in the right hand, and then उसको अभी she at that time वो अपना फोन भी, पेंसिल भी नहीं यूज कर सकती, लिफ्ट नहीं कर सकती थी. And then when I touched this, कि when I dig deeper कि आप कैसे बैठते हो, कैसे आप काम करते हो, कैसे आप पढ़ते हो, so then she told me कि सर मैं ऐसे ऐसे यूज करती हूँ. So इसीलिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान से देखना है कि बच्चे कैसे यूज कर रहे हैं these gadgets. They should understand, और उनको भी वही फॉलो करना है, because kids will learn from the parents itself, right? So अगर आप वो भी आप भी वैसे ही टेक्स्ट करोगे, आप भी वही पूरा टाइम फोन पे रहोगे, आप भी वैसे ही स्क्रॉलिंग करोगे, सोने से पहले करोगे, तो kids will follow this. ठीक है? So make sure जो मैंने बताया, make sure कि आप बच्चों को भी वैसे ही बताओ, because एक बार स्पाइन डिफॉर्म हो गया ना, so it will take years to get to the normal. So it's better कि आप उनको पहले से ही करेक्ट करना स्टार्ट करो. जैसे बचपन में हमें बोलते थे ना, सिट करेक्टली, पहले तो मार पड़ती थी, सिट करेक्टली, इसीलिए होता था. तो लेकिन अब तो मार भी नहीं सकते ना आजकल तो. आजकल मार नहीं सकते, इसीलिए दोस्तों पेरेंट्स को भी स्मार्ट होना पड़ेगा. गैजेट्स, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि आप आईपैड, महंगे गैजेट्स तो आप ला रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और करने से चूक रहे हैं. उससे चूकिए मत, बिकॉज़ इट्स अबाउट देयर हेल्थ. डॉक्टर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये पता कैसे चलेगा कि ये जो बॉडी पेन है, ये जो नेक पेन है, ये जो बैक पेन है, ये मेरे पोस्चर से रिलेटेड है, ये किसी और चीज का पेन नहीं है? क्या ऐसा कोई सेल्फ असेसमेंट हो सकता है कि यार ये जो पेन हो रहा है, ये काफी देर से, ये जो नेक पेन हो रहा है, ये जो मेरे को हेडेक हो रहा है, या बैक पेन मुझे जो हो रहा है, दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ माय बैक पोस्चर.
any way to assess that? See, I mean, I am very much glad that you asked this question. I don't know who has asked this, or maybe from the comments, but it's very, very important. अच्छा, आपने पूछा, good. जी. Because nobody asked this question because खुद को assess करना है, ऐसा नहीं. Posture is not only the solution. Posture is one of the solution. No doubt, posture is very, very important. आपको पहले तो अपना posture ठीक करना है, then everything falls up later. But the thing is, it's ऐसा नहीं कि posture से ही ठीक होगा. Sometimes it's because of mental health. I mean, mental pressure. आपको अगर stress भी है तो आपको shoulders में या tight होना start हो जाएगा. Physical stress, mental stress, उसकी वजह से भी होता है, right? You need to understand कि आपको कब हो रहा है, सुबह हो रहा है या रात को हो रहा है. बैक पेन में बहुत सारे सेल्फ टेस्ट हैं. जैसे आप सीधा लेटते हो, अगर लेग रेज कर रहे हो, आप लेग उठाते ही आपको अगर बैक में पेन आ रहा है तो इसका मतलब यू माइट हैव डिस्क इश्यूज, राइट? अगर आप खांस रहे हो, खांसते ही आपको अगर पीछे बल्ज, हल्का सा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो यू माइट एज वेल फील कि यार इट्स नॉट अ सिंपल बैक पेन, स्टिफनेस वाला पेन नहीं है, ठीक है? सुबह उठते ही आपको अगर नेक स्टिफ हो रही है, ऐसे हो गया, आप हिला नहीं पा रहे हो नेक को, so that means it is because of might be wrong sleeping posture. एक रात सोने से पहले आप स्मार्टफोन पे मूवी देख रहे हो या वेब सीरीज देख रहे हो, या गलत स्लीपिंग posture या wrong pillow positioning. So this can be because of, you need to understand कि ये मुझे कब हो रहा है पेन और इसका कारण क्या है. So then you can analyze कि अच्छा मेरे को अब hot packs लगाना है, ice pack लगाना है, या हमें क्या करना है. And once the pain subsides, क्योंकि जब पेन होता है ना, nobody understand कि यार पहले पेन ठीक करो, भाड़ में गया posture, बाद में देखते हैं posture को, तो posture हम बाद में ठीक करेंगे. So posture is one of the important tool to make you live a pain-free lifestyle. But वो अब होता है जब आप रेगुलरली करोगे तो आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचोगे, लेकिन वो होता नहीं है. हम भी जब दांत ठीक खराब होता है, दांत दर्द होता है, तभी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव में कभी नहीं जाते. तो सिमिलरली हमें अगर हम पोस्चर्स हमेशा अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम उस असेसमेंट तक जाएंगे नहीं. बट कभी ना कभी अगर चले गए, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड टू आवर बैड लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओल्ड हैबिट्स. तो हमें पहले पेन को रिजॉल्व करना विद हॉट पैक्स, फिजियो सेशंस एंड पेन किलर्स इफ रिक्वायर्ड. देन मेक श्योर आप यू अंडरस्टैंड पोस्चर बेटर और उसको अपने लाइफस्टाइल में उतारो, ताकि उस नेक्स्ट टाइम आप उस पेन पे ना जाओ. So that is my take. Yeah. That is really wonderful there. And although I said that was my last question, लेकिन आपके आंसर में से एक और क्वेश्चन निकल रहा है, and I cannot resist asking this, डॉक्टर साहब. I'm taking lot of your time, लेकिन मैं इसको पूछे बिना रह नहीं पाऊंगा इस समिट में, और वो ये है, you said bad pillow positioning. You said something, bad pillow positioning. ये क्या कहा आपने? I think you might be doing this mistake. आपने मेरी बहुत मिस्टेक सुधारी है. आपने you made me invest in a standing workstation. You made me invest in a smartphone stands. दोस्तों, आप सबको बता देता हूँ कि I had this opportunity to work with him closely, और मैंने बहुत सारा सीख लिया इनसे, इनको बिना पता लगे इनकी बातों से. And this is having incredible amazing effects on my health. मैंने ठीक से खड़ा होना, डॉक्टर साहब, शुरू कर दिया है. आपके कहने से मैं ऐसे खड़ा होता था, और ये आपने मुझे ठीक किया है. आपने पिलो पोजीशनिंग ठीक की, स्टैंडिंग वर्कस्टेशन, as I said, how I use smartphone. I think you've corrected a lot of stuff with me, and I'll always be thankful to you. अब जल्दी से बताइए, ये wrong pillow positioning क्या कहा आपने? So wrong pillow positioning मतलब what? Let me just explain you with the thing. So हमारा पिलो इज फॉर, अच्छा टेल मी वन थिंग, पिलो इज फॉर द नेक और फॉर द हेड? देखिए, नेक पे, इसको नेक पिलो मार्केट में हम पिलो ही तो बोलते हैं ना, नेक पिलो. जैसे हम सॉरी ये हेड पिलो यहाँ हेड पे लगा दिया, जैसे रात को लेट तक नेटफ्लिक्स देखा, मूवी देखी अभी, है ना, तो थक गए देखते देखते, लेटे तकिया खींचा और हल्का सा सर के नीचे लगाया और सो गए, बस यही तो है. नाउ टेल मी, वेयर इज योर नेक? नेक डॉक्टर साहब, ये गैप में, ये जो दोनों के बीच का गैप है. So your position of the pillow has to be enough कि आप नेक को सपोर्ट कर रहे हो, not the head. 90% लोग हेड पे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, पिलो यहाँ पे. हमें पिलो रखना है शोल्डर से,
शोल्डर से पिलो रखोगे सो दैट योर नेक इज सपोर्टेड. हम हेड को सपोर्ट करते बैठते हैं दोस्तों because इस हमारा बात spine जो को है, इस बात को सुन लीजिए डॉक्टर साहब. मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ द समिट. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिपीट दैट दोस्तों कि दिस पिलो दैट दे यूज is for where should they ideally be keeping it when they are lying on the bed. प्लीज बताइए डॉक्टर साहब. sorry I didn't get you. I said I thought प्लीज you were एक बार फिर से बताइए where should they be keeping the pillow when they are lying on the bed. कहाँ उनको रखना चाहिए. हाँ, सो आपको जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस इज अ पिलो. सो ज्यादा टाइम लोग हेड पे रखते हैं, हमें रखना है शोल्डर से यहाँ पे सो दैट ये जो नेक का कर्वेचर है, हमारा जो नेक का जो कर्व है वो सपोर्ट हो. इफ सपोज आपको किसी ने बताया है कि आपको पिलो यूज नहीं करना, तो होता क्या है, वो ड्यूरेशन ऑफ आपको फॉर एग्जांपल किसी को पेन हुआ है नेक पेन के, आप किसी फिजियो के पास गए या किसी फिजिशियन के पास गए, औरतों के पास गए, दे हैव एडवाइज यू कि आप पिलो यूज मत करो. सो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यूज नहीं करना. अब वो क्या करते हैं लोग, हमेशा यूज नहीं करते हैं, दैट बिकम्स अ हैबिट, और उसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी नेक फ्लैट होना स्टार्ट हो जाती है. सो अब क्या करना है, तो हमें कुछ टाइम तक यूज नहीं यूज करना, लेकिन हमें हमेशा पिलो यूज करना है. इफ नॉट पिलो, यू कैन टेक अ टॉवल रोल, जो हमारा बाथ टॉवल होता है, उसको रोल करो एंड पुट इट अंडर द नेक. सो दैट विल गिव यू सिंपल सा है. हमें हमारा जो कर्वेचर है, हम जब लाई डाउन करेंगे तो हमारा कर्वेचर हवा में रहेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ तो ब्रिज होना चाहिए. सो दैट पिलो और योर टॉवल रोल विल मेक दैट ब्रिज to maintain that curve, otherwise flat ho jayega. I hope I understood. It was indeed, yes, I understood. I'm sure all the people who are listening to us have understood. Our Dr. Saab, I can't thank you enough, and I genuinely want to thank you from the bottom of my heart for coming here today and sharing almost everything in this limited time frame that people needed to know as far as their posture, how they use their smartphone, tablet, desktop, the way they sit on their workstations, the way they sleep and whatnot. I think you covered, including the exercises. I think it was a very comprehensively, beautifully done session. I really want to thank you for taking your time out, coming here today in the Superpower Success Summit and sharing these ideas with us. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Saab. Wow, that was amazing. Friends, that was Dr. Dipankar. हमने इनका जरूरत से ज्यादा समय लिया, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं और ये I genuinely hope that it was all worth it for you. This is what the session was all about. दोस्तों, you have to take care of your health. Your posture is playing a very, very important role. मैंने एक सेशन में कहा, मैं फिर कहता हूं कि मैं इस चीज से परेशान रहा हूं खुद लाइफ में. जब मैं स्टूडेंट था तब भी, जब स्टूडेंट था सीए की पढ़ाई कर रहा था, आसान नहीं था. घंटों घंटों लगातार 10-10 12-12 घंटे की पढ़ाई हो रही है. फेल हो गए 1-2 बार तो प्रेशर और बढ़ गया कि अरे ये 10 घंटे ही पढ़ रहा है, और ऐड कर और पढ़ उसमें. तो जब लगातार पढ़ते थे तो लाइब्रेरी गए तो टेबल चेयर पर बैठ के घंटों पढ़े, घर आए तो बेड पर बैठ गए, तो बस पढ़ रहे. और एक समय ऐसा आया जब और पढ़ते ऐसे एकदम नीचे गर्दन करके पूरा पढ़ रहे हैं उसे. और मैं चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट्स है, अगर आप स्टूडेंट तो ध्यान से सुनिए. इतनी इंटेंस पढ़ाई जब आप करते हैं और आजकल है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो क्या होता है कि यू फॉरगेट योर पोस्चर एंड इट हैज व्हेन यू डू इट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम फॉर मेनी डेज बैक टू बैक, या आपके नेक पर, जैसे उन्होंने कहा, हर एक एंगल पर वो वेट बढ़ता जा रहा है. वी डोंट अंडरस्टैंड दिस. आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी थैंकफुल. वी शुड ऑल बी वेरी थैंकफुल फॉर हिम फॉर कमिंग हियर टुडे एंड शेयरिंग दीस आइडियाज कि वो वेट बढ़ता जा रहा है. और दोस्तों, ऐसा पेन हुआ कि बस मुझे लगा कि ये हो गया मेरे को कुछ सीरियस प्रॉब्लम एंड आई जस्ट वोंट बी एबल टू स्टडी. बैठ ही नहीं पाता था. यहां मैंने बुक खोली, यहां हेडेक शुरू, और एकदम सिवियर पेन पूरी बॉडी में. चेक किया तो पता चला इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय पोस्चर. बैठने के तरीके को चेंज किया, बढ़ने के तरीके को चेंज किया, फर्क आया. जब मैं व्हेन आई वाज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, सिस्टम के आगे जब बैठता था तो वो जिस तरीके से, डॉक्टर साहब ने सब बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो गैप, जैसे सपोज कुछ देखना है, सिस्टम में कुछ देखना है तो पास चले गए, आप वहीं बैठे हुए लेकिन आप पास जा रहे हो, वो इट्स हैविंग अ टोल ऑन योर नेक एंड इट स्टार्टेड हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट. The way you stand, the way I stand, I mean, all of that.
it contributes to your entire health. और आप अगर healthy नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते. You cannot have ultimate success in your life if you're not healthy. पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा है घर में माया. तो अगर आप ये सोच रहे कि माया आए, पैसा आए, मैं सक्सेस बनूं, तो हेल्थ प्रायोरिटी है. और आप देखेंगे ये 2-3 सेशन जो लगातार हुए और आगे भी कुछ सेशंस ऐसे और हैं जो आपकी हेल्थ के अराउंड है. तो आई सिंसियरली होप कि आप सभी को इन सेशंस में काम और फायदा मिला होगा. ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा योर बेस्ट पोस्चर इज योर नेक्स्ट पोस्चर. योर बेस्ट पोस्चर, कैसे बैठूं, बेस्ट कौन सा है? बेस्ट ये कि मूव करो, नेक्स्ट पोस्चर, get up, go out, fill up a glass of water, take it, come back to your seat, start working then, right? अब हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स भर के डेस्क पे ही रख ली, पानी लेने भी नहीं जाना, हाँ, वायर लैपटॉप में ही लगाया, उसको चार्ज करने भी नहीं जाना फोन को, चिप्स के पैकेट 2-3 वहीं खोल लिए, हिलना ही नहीं है. ऐसा ना करें प्लीज, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. 2 लीटर की कोक की बोतल टेबल पे ही रख ली, राइट, पूरे दिन चल रही है वो, अब कोई टेंशन ही नहीं, मूव ही नहीं करना. ऐसा ना करें. Please ensure that you move. Please ensure that you stay hydrated. Please ensure that you move. Please ensure that you use your smartphone smartly. Please ensure that your posture 90 degree. Go back to this session. Watch it again, I would suggest. Or the way you use your pillow, it's very important. The way you use your pillow is extremely important, friends. When you sleep at night, a lot of you do a lot of, this Netflix and all of that. It's important that you take care of how you sleep. I sincerely hope that all of you found this session extremely useful and informative. Let's once again thank Dr. Dipankar for this. So, dosto, ye tha day 19 ka desk yoga session. I hope you enjoyed it. You learned a lot of ideas. And now we're all set for day 20. Day 20, it's going to be tomorrow when I come here with one another expert, with one another topic, a very relevant one for all of you. So do not miss that. Once again, a happy Janmashtami to all of you. Take care, stay healthy. See you tomorrow. Bye for now. Let me call upon stage Nitin Soni. Louder, louder, louder. Come on, louder. दोस्तों, success in any field is 70% psychology and 30% mechanics. किसी भी फील्ड में, in whatever field you choose, success is all about 70% psychology and 30% mechanics. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी क्या डेब्यू में? अच्छा, सचिन तेंदुलकर ने मारी थी? अच्छा, धोनी ने मारी थी? But all of these 3 individuals are legends, in spite of the fact that they did not score century on debut. Even if you are not able to score century on debut, you can still become a legend if you take few things right. Understand this. Why do you want to become what you want to become? Why do you want to get that success? Why do you want to get that degree? Why do you want to become a rank holder? Why do you want it? Answer your why. They are compromising on their potential. You have amazing potential in you. Why do you want to restrict it? You're not supposed to restrict your potential. Warren Buffett has 97 different streams of income. 97. And the day I realized, the day I noticed it, I said, 97? What the hell? What is the difference? The difference is in their psychology. That's where the entire difference lies. That's the main thing. You need to understand your psychology, your mindset. Usme kya chal raha hai? That's what you need to focus. Excellent. And I knew I would be the top scorer in the institute. And that's exactly what I did. Each and every paper that I gave, when I came back home, I said, I'm ready for the next one. And I did that. Ready for the next one. Did that. Then I waited for my results. And on the results day, what did happen? I failed. What is it that I can do now? At the best I can study. At the best I can put in the hard work. At the best I can do whatever is possible for me to do. What else can I do? He actually looked at the big portrait of Mount Everest and he said, Mount Everest, I know you are failing me. But the more and more you fail me, the more and more I'm getting determined that one day I'm going to stand on top of you. Do you know why, Sir Edmund Hillary said? He said, do you know why? Because you, even as Mount Everest, cannot grow any further. But I, as a human being, will keep growing. That's my message to you. Keep growing. No matter what Mount Everest you want to climb in your life, you can. If you have the right mindset.
mindset, and if you do not let your failures enter your mind, why? Because it's your responsibility, friends. It's your responsibility. Nobody else is going to work hard for you. Nobody else is going to bring your dream in a silver plate and say, hey, here is your dream, enjoy. No, that's never going to happen. You will have to work hard. You will have to put in the hard work. You will have to work the midnight call. You will have to make your dream come true. The responsibility is yours. I cannot do your push-ups for you, can I? Can I? Of course not. You will have to do your push-ups. What do? You notice that you are not the only one who is watching that dream. You are not the only one having that dream inside you. When there are 1,000 other mothers who are having the same dream for their sons, what do you do to make the dream of your mother come true? You outwork your competition. You outwork your competition. You get up early. You work harder. You stay longer. You do whatever it takes. You got to overwork. You got to outwork. You got to outsmart everybody else. Because if you don't do it, someone else is going to do it. If you don't do it, someone else is going to do it. If you are not getting up early, someone else is getting up early. And he is going to grab your position. He's going to grab your position. Understand this. You got to outwork your competition. If it means doing anything that you have not done till date, you should be interested in doing it. Learning techniques, learning facts, programming your subconscious, whatever it may be. Be ready to outwork your competition. My intensity multiplied. My hunger multiplied. My seriousness multiplied. I prepared like hell. I was actually doing things that nobody around me was doing. I was studying for 12 hours a day, and I said, no matter what happens on the results day, I'm going to give my best shot in this attempt. I studied like anything, and I did all those test papers, working studies over and over and over again. I revised over and over and over again, and I gave my exams to the best of my ability. On all the results, the screen said, pass. Unless and until you answer your whys, you will not be able to remain motivated. You need motivation? Answer your whys. Answer your whys. Why do you want to do what you want to do? Is it because of your father? You want to make your father's dream come true? Is it because of your mother? Your mother is looking a dream for you and you want to make her dream come true? Is it because of your siblings, your brother, your sister, your other family members? Or is it probably because yourself? You say, I want to become rich because I want to prove to the world that I am a rich person and I am not a poor person. You got to answer your whys. Why do you want to become what you want to become? Answer your whys. Because this is exactly where motivation lies. What are you waiting for? Whatever it takes. Even if it takes for you to learn something, learn it. If it takes for you to work hard, work hard. If it takes for you to get up early in the morning, get up early in the morning. If it takes for you to work in and day out, do it. He was the world heavyweight champion in boxing, Mike Tyson. डरते थे लोग उसके नाम से. और Mike Tyson won 37 fights back to back. अपनी लाइफ की पहली फाइट से लेकर 37 फाइट्स तक माइक टाइसन हर एक फाइट जीतता गया. एक भी फाइट वो नहीं हारा. और पीपल यूज्ड टू स्वेट बाय हिज नेम. करते थे लोग उसके नाम से. 37 फाइट लगातार जीतना इज नो गेम. एंड ही वाज द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन. 37 फाइट लगातार जीतने के बाद जो 38वीं फाइट उसकी थी वो थी अगेंस्ट जेम्स बस्टन डगलस. और ये जेम्स बस्टन डगलस कौन था? कुछ भी नहीं. अ नॉर्मल बॉक्सर, वेरी नॉर्मल बॉक्सर. कभी भी अपने लाइफ के अंदर हैवीवेट चैंपियन नहीं बना. कभी भी उसने कोई बहुत बड़ी चैंपियनशिप नहीं जीती. वेरी नॉर्मल बॉक्सर. 38th मैच माइक टाइसन का अगेंस्ट जेम्स बस्टन डगलस. इट वाज अ वन साइडेड मैच. दे सेड माइक टाइसन इज गोइंग टू विन एनीवेज. सारा मीडिया हैरान, सारी दुनिया हैरान. माइक टाइसन लॉस्ट द मैच. 38th फाइट माइक टाइसन लॉस्ट इट. हाउ कम? ये कैसे हो सकता है? सारा का सारा मीडिया पागलों की तरह जेम्स बस्टन डगलस के पीछे. बस्टन डगलस, ये तुमने किया कैसे? हाउ डिड you just won against Mike Tyson? Impossible. How could you do the impossible? ये किया कैसे तुमने? He said, before this match, my mother declared to the world that her son is going to beat Mike Tyson. She declared it to the world, to the relatives, to the friends, everybody, and she was extremely happy. और जेम्स बस्टन डगलस ने कहा, माँ क्या कर रहे हो ये? Why are you doing that? I'm not too sure. She said, you are not sure. I am sure because I believe in my son. My son is going to beat the hell out of Mike Tyson, and my son is going to win.
He said, it was my mother's dream that I beat Mike Tyson. It was my mother's dream that I become the world champion. It was my mother's dream that I become a true champion in my life by beating Mike Tyson. And not just Mike Tyson, whoever it may be. And my mother died 2 weeks before this match. He said, my mother died 2 weeks before this match. And I wanted to make her dream come true. He said, I wanted to make her dream come true. Mike Tyson के अलावा अगर वहां पर 100 Mike Tyson भी होते, उसके बावजूद मैं ये मैच जीतता. Because it was my mother's dream and I wanted to fulfill my mother's dream. ये सोचता है कि मैं स्पेशल नहीं हूं. अगर यहां एक भी सोचता है कि मैं वर्दी नहीं हूं, मेरी रिक्वेस्ट है उससे कि आज की शाम अपने पेरेंट्स के साथ बिता लेना. आज की शाम तन्हाई में अपने पेरेंट्स के साथ बिता लेना और आपकी माँ, आपके पिताजी आपको बताएंगे कि आप कितने स्पेशल हो. There is nobody in the entire world who has a fingerprint like you. Luck, नसीब. कई मैं से देखता हूं जो अपने नसीब को पकड़ के बैठते हैं, जो ये कहते हैं कि it's only and only because of my luck. If I'm failing, it's only because of my luck. नसीब की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता. मगर दो तरह के लोग हैं, बिलीव करते हैं नसीब, कुछ बिलीव नहीं करते नसीब के ऊपर. आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी नसीब की वजह से ही सब कुछ होता है, अगर आपके लक की वजह से ही सब कुछ ये हो रहा है, तो मेहनत क्यों कर रहे हो? मेहनत करने की क्या जरूरत है? और अगर नसीब में नहीं लिखा, तो मेहनत करके क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? नसीब को लेकर के मत बैठो. जब आप अपने नसीब को देख करके कहते हो कि भाई कभी ना कभी तो चमकेगा, आपका नसीब आपको देख करके कहता है कभी तो समझेगा. आप नहीं समझते. You command respect, power, recognition, social status, everything. It has amazing power. I'm the king of the jungle now. If you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be easy.